this is volume 2. Okay, volume 1 के बाद एक separator आएगा yellow color का, so that tells you this is volume 2. So this first page will give you index to standard ports. Next page you have this diagram. Okay, this is the diagram which I had sent to you. This is what we use for tide calculation questions based on volume 2 and volume 3. It is same for both the volumes. So this is given in after the index page of volume 2. If you see volume 3 also, you will find the same diagram. I'll show you. This is volume 3 beta, and you see this is the same diagram here. So this is the diagram which we require. So if you don't have a copy, you can use the diagram given in your book also, but just use light pencil on it so that you can erase it and later on take a photocopy or a printout of that page. Okay, so let's now move on to the calculation of tides for standard ports in volume 1. It is simpler. Volume 2 and 3 is simpler because there is only one curve or one graph which is used. In ATT volume 1 we saw every port, every standard port had a different curve, but in 2 and 3 it is not the case. One single curve can be used for any port tidal calculation. So that makes things simple for us. And the second important difference is when I show you the diagram, it will become clear in your mind. The interpolation between the curves, you remember the dotted line and the solid line. In volume 1, it is done on the range of tide. Okay, neap range and spring range, and we were interpolating between them. For volume 2 and 3, the interpolation is done on the basis of duration of tide. Okay, that is the only difference. It will become clear to you when we see it on the diagram. So that's the difference. So we will now proceed ahead with volume. We shall now familiarize ourselves with the pages contained in part 1 of the Admiralty tide tables, the volumes that cover the non-European waters. Now this page in part 1 contains daily predictions of times and heights of high and low waters at the standard ports. And the page looks somewhat like this. We have the page of Bombay on display. This page is more or less very similar to the page we had in ATT volume 1 as well. In this page on top, we have the port details and its coordinates. Then we have the year of the tide tables, which in this case is 1992. And then we have the time zone for India, which is minus 530 hours. Okay. Now, beta, first exercise we do is, now we know Bombay is in volume 2 or volume 3, some of the volume other than volume 1. So can you find out this page in your tide table booklet? Okay. How will you find out a particular port, beta? Sir, geographical index से देख के फिर page number. Very good, beta. So just do this exercise. Go to the geographical index of volume 2 and see if Bombay is there. If you don't find it, go to volume 3 and try to find it there, and let me know once you have found out. Very good, great. So let's go ahead. And then we have this main body of the page, which contains the daily predictions. So this page is similar to what we also had in ATT volume 1. We shall now familiarize ourselves with the diagram that shall facilitate calculation of heights of tide at times other than high water and low water. The diagram that shall be used for all ports of non-European waters is the one that is shown on the screen. There is only one diagram that is used for all ports. In
contrast to what we did in ATT volume 1. If you remember, in ATT volume 1, every standard port had its own diagram. So in ATT volume 1, that is European waters, these diagrams are port specific, and other than that, we have the single diagram which shall be used in every case. Now in this diagram, we again have high water at the middle of this baseline. To the right of it, we have this +1 hour, 2 hour, 3 hours with plus prefixes. So that's interval after high water. To the left of it, we have interval before high water. Then we have the chart datum out here, this line representing chart datum. Then we have the scale for height of low water. And we also have the scale on top for height of high water. Please pay attention that there are two scales, one from 0 to 4 and 0 to 7 here. So that is the same scale. The other one is 0 to 8 here and 0 to 14 on top. We have to use the largest possible scale depending on the heights of tide involved. And only care that has to be exercised is that whichever scale is being used for marking the height of low water, same scale should be used for marking the height of high water. So please be a little careful here. Okay. So beta, did you understand these two scales which are given in the diagram? यस सर, जो स्केल नीचे यूज करेंगे वही सर सेम ऊपर यूज करना है. Right, that's right, beta. Now, if you look at the bottom, at the low water scale, there are two scales. One is 0 to 4, another is 0 to 8. And if you look at high water, you have again two scales. One is 0 to 7, another is 0 to 14. So let us say for low water, if you are using a scale of 0 to 4, which scale of high water will you be using? 0 to 7 sir. Very good, beta. So you have to be careful. You have to use 0 to 7. Don't use 0 to 4 scale at the bottom and 0 to 14 on top. Otherwise, the question will become wrong. The 1 unit of your scale should be same whether it is for high water or it is for low water. Sir, can you please elaborate with an example, sir, so that it can be clear? हाँ बेटा, एग्जाम्पल अभी करेंगे. अभी एग्जाम्पल करेंगे, बट इसमें बेटा एग्जाम्पल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप यहाँ पे इंटरपोलेशन लाइन ड्रॉ कर रहे हो और आपने 1 मीटर को यहाँ पे लिया है, where the cursor is right now, which scale are you using? Are you using 0 to 4 or 0 to 8? Sir, 0 to 4. That's right. अब अगर आपने 1 मीटर को यहाँ पे लिया है, हाई वाटर 2 मीटर है, तो उसे कहाँ पे लोगे आप? ये 2 मीटर यहाँ भी लिखा है और 2 मीटर यहाँ भी लिखा है. Which will you take? Left side 2 or the right side 2? Sir, the left side 2 I will take, sir. ओके. अब नीचे आपने 1 मीटर लिया है और एग्जैक्टली इसी के ऊपर यहाँ पे 2 मीटर ले लिया है. इज दिस मेकिंग सेंस? No, sir. No, sir. Which I will take 2, sir. If I will take down 1, then other side I have to take 2, sir. Right. So you will take the right side 2 here. Anyway, it will become clear when we do it in the examples. So let's move ahead. Tide curves here, these curves are based on duration of tide, 5 hours, 6 hours, and 7 hours. Unlike the curves for ATT volume 1, which were based on the range of tide. If you remember, there were two curves, a solid curve for spring range and a dotted curve for broken line curve for the neap range. So in ATT volume 1, these curves were based on ranges. But here, for non-European waters, these curves are based on duration of tide. Okay. So beta, you see these 3 curves. So this is understood now. These are based on the duration of tides. For 5 hours, we use the innermost curve. For duration of tide, which is 6 hours, we use the middle curve.
and for a duration of 7 hours we use the outermost curve. If our duration is anything in between these values, let us say our duration of tide is 5.5 hours, so then we will go in between the 5 and 6 curves. So exactly in the middle will be our particular curve which we should be using. So in volume 1 this was not based on time. In volume 1 this was based on the range of tide. Clear beta? Understood? Yes, sir. Very good. There are 3 curves for 5 hours, 6 hours, and 7 hours. This curve, which is now being marked by the blue arrow out here, this is the curve for 5 hours duration. This is the curve for 6 hour duration, middle one, and the outermost is the curve for 7 hours duration. Now, if our interval, or our duration rather, if our duration of tide falls between 5 and 6 hours or 6 and 7 hours, we shall do the linear interpolation, and interpolation can be visually done. But if our duration of tide happens to be outside 5 hours to 7 hours range, extrapolation is not allowed. No extrapolation allowed, interpolation is allowed. Needless to repeat again, this side of the curve is obviously before high water, and this side of the curve is after high water. So have a good look at this diagram beta, read these points in your mind. Let me know any doubt coming anywhere. सर इसके अंदर स्प्रिंग और नीव कर्व नहीं होता? नहीं बेटा, इसमें स्प्रिंग और नीप कर्व पे हमारी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होती है. इसमें सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइड पे ही कैलकुलेशन बेस्ड होती है. एंड सर हमें मतलब पेपर में एग्जाम में जैसे पता कैसे चलेगा कि ये वाला डायग्राम सही है या फिर वो दूसरे जो पोर्ट वाइज है वो वाला सही है? I didn't get you बेटा. Can you ask again? What is the doubt? सर लाइक जो टाइड का ये ग्राफ है जो हमें दिया हुआ है, हमने जो पहले वाले किए थे वो तो किसी स्पेसिफिक पोर्ट के लिए थे ना. अब ये वाला तो सब पे एप्लीकेबल है, तो ये वाला ही ग्राफ उन पे भी एप्लीकेबल होगा जो हमने पहले किए थे? ओ, ये जो ग्राफ है बेटा, ये आपको ATT वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के आगे ही मिलेगा. दिस ग्राफ इज नॉट गिवन इन ATT वॉल्यूम 1. तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि वो जो पोर्ट है वो कौन से वॉल्यूम के अंडर आती है. अगर वो 2 और 3 के अंडर आती है तो हम ये वाला ग्राफ यूज़ करेंगे जो अभी स्क्रीन पे हमारे सामने है. अगर वो पोर्ट वॉल्यूम 1 में आती है तो हमें उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पोर्ट के ग्राफ को यूज़ करना पड़ेगा. इसे यूज़ वॉल्यूम 1 के लिए नहीं कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू. ओके. और बताओ बेटा, और डाउट्स? सर हाँ बोलो बेटा. 5th 6th 7th का कौन सी कर्व यूज करेंगे सर? यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं 5 घंटे का कर्व यूज़ करूँ, 6 घंटे का यूज़ करूँ या 7 घंटे का, कौन सा यूज़ करूँ, राइट? हाँ जी, हाँ जी. ओके. अब आपको बेटा उन्होंने एक पर्टिकुलर पोर्ट दी और एक पर्टिकुलर डेट दे दी, ठीक है, कि इसका हाइट ऑफ टाइड निकालो, राइट? अब हमने क्या किया, हम उस पोर्ट में चले गए, हमने उसका जो हाई वाटर लो वाटर का टाइम निकाल लिया, और हाई वाटर और लो वाटर के टाइम का डिफरेंस, दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइड, वो भी हमने निकाल लिया. अब वो जितनी ड्यूरेशन हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आती है उसी के हिसाब से हमने कर्व को पिकअप करना है. अगर हमारी ड्यूरेशन 5 घंटे आएगी तो ब्लू कलर वाला कर्व पिक करेंगे. अगर उस पर्टिकुलर डे उस पर्टिकुलर पोर्ट पे ड्यूरेशन 6 घंटे की है तो हम रेड कलर वाला कर्व पिक करेंगे, और अगर ड्यूरेशन 7 घंटे की है तो हम ग्रीन कलर वाला कर्व पिक कर लेंगे. ओके बेटा? हाँ सर. गेटिंग क्लियर? यस सर. राइट. और बताओ बेटा, और कोई डाउट?
वेरी गुड, ग्रेट. लेट्स मूव अहेड नाउ. यही मेन डिफरेंस है वॉल्यूम 1 में और बाकी के वॉल्यूम्स में कि जो ये डायग्राम हम यूज़ करते हैं ये डायग्राम अलग है. So once you have understood this, rest of the procedure is more or less the same. So let's go ahead. Having completed the familiarization process, now let's solve some questions and apply what we have learned. Find out the height of tide at Suez at 1100 hours GMT on 28th April 1992. Okay. So बेटा हमें अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया है सुएज पोर्ट. सो पहली एक्सरसाइज ये करो बेटा, मुझे ये बता. गुड बेटा, ग्रेट. लेट्स मूव अहेड. Now, Suez being in ATT volume 2, we go to the geographical index of volume 2, which is alphabetically arranged. So we reach Suez, and when we reach Suez in the geographical index, we find Suez is in bold and capital letters, implying Suez is a standard port of ATT volume 2, whose predictions are on page 111. So from here, we go to page 111 of ATT volume 2 and we get the information for Suez. Here we pick out the daily predictions for 28th of April, and you can see this is the information for 28th April. Okay, so just note down this question in your notebooks beta, and note down these heights and times of tide for Suez on 28th April. Let me know once you are done and we'll proceed ahead. Don't copy it from the screen, pick it up from the tide tables. Tabulated time zone is marked here. We have already discussed earlier, and the time zone used for Suez is -2 hours. What does it mean? That Suez time is 2 hours ahead of GMT, or GMT is 2 hours behind Suez. Okay. So बेटा ये जो टाइम जोन यहाँ पे दिया हुआ है, it is important in this particular question. Why? Because इन्होंने जो हमें हाइट ऑफ टाइड मांगी है वो 1100 आवर्स जीएमटी पे मांगी है, सुएज टाइम में नहीं मांगी है, जीएमटी पे मांगी गई है. जो ये डेली पेजेस पे हमें हाइट्स दी होती हैं, दे आर गिवन इन द लोकल टाइम्स, सो दीज आर सुएज टाइम्स. अब अगर सुएज टाइम को जीएमटी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम इस टाइम जोन को यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? सुएज के टाइम में अगर ये अप्लाई कर दिया जाए, मीन्स सुएज के टाइम में अगर -02 आवर 00 मिनट कर दिया जाए तो जीएमटी आ जाएगा. और अगर जीएमटी से सुएज टाइम निकालना हो तो इसके ऑपोजिट करना पड़ेगा. जीएमटी में 2 घंटे प्लस कर दिए जाएं तो सुएज टाइम आ जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ द टाइम जोन. इज इट ओके बेटा? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी. हाँ बोलो बेटा. सर तो सर फिर जीएमटी जो जीएमटी टाइम क्वेश्चन है उसको सुएज टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं. हाँ बेटा, हम उसी को कन्वर्ट करेंगे सुएज टाइम में और फिर तो सर निकालेंगे. ये -200 आवर्स प्लस हो जाएगा ना सर, माइनस जीएमटी है सर, टाइम जोन माइनस में है सर, तो जीएमटी में ऐड होगा, करेक्ट? Correct. It will be added to the GMT to get the Suez time. Okay, let's move ahead. Now, these times here would be in the Suez Standard Time, or the Egyptian Standard Time. And if we have to deal with GMT, we'll have to convert GMT into the standard time of Suez before we can continue with our calculations.
So we just saw that the time zone for Suez is -2. Tide required is for 1100 hours GMT. So we'll have to convert GMT into Suez time. So GMT is 28th April, 11 hours. Zone difference is 2 hours. We know Suez is 2 hours ahead of Greenwich. Therefore, when it is GMT 1100 hours, Suez time shall be 1300 hours. So that means we have to calculate the height of tide at 1100 hours GMT, which is same as Suez time 1300 hours. So is this okay up to here, beta? Any doubts up to here? No, sir. No, sir. Very good, beta. Let's move ahead. And this daily prediction for 28, we have just picked up from part 1, page 111 of volume 2. So beta, now we require the... Sir, but this whatsoever we are given in volume 2, this daily pages, this is in zone time or sir, this is in GMT time, sir. ओके बेटा, जोन टाइम जो है ये कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है. योर क्वेश्चन शुड बी वेदर दे आर गिवन इन लोकल टाइम और जीएमटी. Yes, sir. Yes, sir. That's only. All the tide times are given as local times. Okay, sir. Okay. Nothing is given in GMT. हाँ, अगर कहीं पे GMT लोकल टाइम है तो वहाँ पे GMT will match. बट अदरवाइज टाइड टेबल्स में जहाँ कहीं भी आपको टाइम मिलेगा वो हमेशा लोकल टाइम ही होगा. उसका रीज़न ये है दैट लेट अस से यू आर सिटिंग इन मुंबई. आप मुंबई या बॉम्बे का अगर टाइम वहाँ से निकालते हो तो आपको उसमें कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. जो टाइम आपको टेबल से मिला दैट इज़ द टाइम एज पर यूर कंट्रीज टाइम व्हेन द हाई टाइड और लो टाइड विल बी देयर. सो इट इज़ मच ईजी फॉर अस टू यूज़. अगर सारे जीएमटी में दिए होते तो फिर तो उनको कन्वर्जन करने में ही कॉम्प्लिकेट हो जाता काम. सो दैट्स व्हाई ऑल दीज टाइम्स आर गिवन एज लोकल टाइम्स. So that is the standard time of the country. That's right, beta. Where the port is, standard time of that particular country. Yes, sir. Okay, let's move ahead. Now, since we need it for 1300 hours Suez time, so this interval, this time shall fall between this high water at 0842 and low water at 1430. So we'll have to basically work out in this period. Now we have this graph diagram which we just discussed. We have high water at 842 when the height is 1.6 meters. We have low water at 1430 when the height is 0.8 meters. From here, we can work out the duration of tide, which comes to 5 hours 48 minutes. And from here, we can work out the range of tide, which is 0.8 meters. So beta, just note these values down and work out the duration and range. Let me know if you have any doubts anywhere. No, sir. Very good, beta. Let's proceed ahead. And the time for which tide is required is 1300 hours Suez time. So we can find its interval after high water because it's a ebb tide, it's a falling tide. So we can find out this interval, and we find that the interval from 0842 to 1300 hours is 4 hours 18 minutes after high water. Now, having got this information, we go on to plotting on this side. So first, we shall mark off the low water height on the lower scale out here for, and we know the low water is 0.8 meters. So we mark off 0.8 meters. We are using the bigger scale, the 0 to 4 and 0 to 7.1. On the upper scale, we shall mark the height of high water. We join them and we get the interpolation line.
Okay. So you see beta, the low water was 0.8 meters. हमने लो वाटर में 0 to 4 का स्केल यूज़ किया है, 0 to 4 scale. So 0.8 meters came here at this particular location. Since we used 0 to 4 here, we will be using 0 to 7 on top, 0 to 7. So 0 to 7 वाले स्केल पे 1.6 meters जो है, it comes here, 1.6. So these are the 2 points, we join them and we get the interpolation line. So any doubts up to here, beta? Sir, the thing is there are two mentioned above, sir, for the high water and low water. So which one we have to choose? Ask again, beta. Sir, there are two scales mentioned. Sir, 0 Right. to 2 and the below one is 0 to 1. Right. Beta, So sir, which one we have to use? वेरी गुड. अब बेटा आप ये देखो कि लो वाटर के लिए आपने कौन सा स्केल यूज़ किया है. आपने लो वाटर के लिए 0 to 1 यूज़ किया है या 0 to यूज़ किया है. नीचे कौन सा यूज़ किया है आपने? Sir, Are you there, beta? Are you there? 0 to 1, sir. 0 to 1 यूज़ किया है. वेरी गुड, क्योंकि 0.8 मीटर को हमने यहाँ पे शो किया है. So we have used 0 to 1 at the bottom. We will have to use 0 to 1 at top also. Okay, sir. Okay, that is why 1.8 has gone here. Okay, beta, clear? Yes, sir. Okay, let's move ahead. It's 0.8 height of low water and 1.6 meters the height of high water. Now we come to the baseline here. Our interval is 4 hours 18 minutes after high water. We can see here that for each hour there are 3 divisions, so each division represents 20 minutes. Accordingly, we can reach where it represents 4 hours 18 minutes after high water, so it shall be to the right. And from there, we go vertically up to which curve? Our duration is 5 hours 48 minutes, so we shall be visually interpolating between 5 hour and 6 hour curve. So we go vertically up from here. This is the interval after high water. So we go vertically up to 5 hours 48 minutes. And from there we go horizontally to hit the interpolation line. Okay. So बेटा सबसे पहले तो हम 4 hour 18 minutes plus गए high water से, because our time was 4 hour 18 minutes after high water. And when you go up now, first you hit the 5 hour curve. After some time you get the 6 hour curve, and then on top you have the 7 hours curve. अब हमें कहाँ पे रुकना है? हमने ये डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइड. हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ टाइड है वो है 5 hour 48 minutes. सो सबसे नीचे वाला जो कर्व था वो 5 घंटे के लिए था, मिडल कर्व 6 घंटे के लिए था. इन दोनों में जो डिफरेंस है ये 60 मिनट्स, 1 घंटे का डिफरेंस है. हमें 48 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली आगे जाना है 5 hours से. सो विजुअली यू कैन इंटरपोलेट. इट इज़ ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल इंटरवल. 5 से 6 घंटे का जो पूरा इंटरवल है 60 मिनट का, उसका ये 3/4 है. सो अप्रॉक्सीमेटली हमने यहाँ पे ये 3/4 पॉइंट सिलेक्ट किया एंड वी वेंट हॉरिजॉन्टल. सर एक क्वेश्चन है सर. बोलो बेटा. सर ये जैसे पहले आपने उसके क्वेश्चंस कराए थे एडमिलिटी, मतलब सर वॉल्यूम 1 के सर, उसमें सर 5 hours अगर वहां दिया होता 5 hours 48 minutes, तो 5 hours के आगे हम लोग जाके फिर स्प्रिंग और नीप के बीच में प्लॉटिंग करते थे. यहाँ पे तो सर हम लोग पीछे आ रहे हैं सर, ऐसा क्यों सर? आई डिडंट गेट यू बेटा. हम 5 hour के पीछे नहीं आ रहे हैं. ये देखो सर ये हम क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है सर ये इसमें वीडियो में, बट
आई थिंक सो सर ये 5 आवर्स के पीछे है सर, +1 +2 +3 +4 और +4 के बाद है सर। बेटा यू आर सेइंग कि जो ये नीचे हमने सर्कल लिया है ये 5 आवर के पीछे क्यों लिया है, राइट? यस सर। हमें तो 5 आवर के आगे लेना चाहिए, दिस इज द डाउट ना? यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं ना, दिस पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटरवल फ्रॉम हाई वाटर। इंटरवल, अब हमारा इंटरवल कितना है? हमें जिस टाइम के लिए टाइड चाहिए वो है 1300 आवर्स, हाई वाटर का टाइम है 842 आवर्स, हमारा इंटरवल है 418। ओके ओके सर, ओके सर, वो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा मैं ड्यूरेशन और इंटरवल में, उसकी वजह से। ठीक है सर, थैंक यू। Right. So that is why we kept it at 4 hour and 18 minutes. जब हम यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाएंगे, अब हमें कहाँ पे रुकना है? That is decided by the duration of tide, which in our case is 548. Okay. Any more doubt up to here, beta? Very good. Great. So once we hit the interpolation line, now it is easy, simple. Where this horizontal line hits the interpolation line, from here we go vertically upward, and where it cuts this scale out here, we read it on the same scale on which the height of low and high water were marked. And when we read from here, we find that the height of tide at 1300 hours Suez time, which is the same as GMT 1100 hours, is 0.9 meters. Therefore, height of tide at GMT 1100 hours on 28th April is 0.9 meters. So Yes, that sir, 0.9. completes. हमारी जो डायग्राम है यहाँ पे 3 कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। सो लेट मी मेक दीज 3 कर्व्स। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये है पहला कर्व हमारा, ये है दूसरा कर्व हमारा, सेकंड कर्व, और ये है तीसरा कर्व। दिस इज हाउ द कर्व्स आर। नीचे यहाँ पे इनको ज्वाइन किया गया है एक लाइन से। जो पहला कर्व है इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 आवर्स। जो दूसरा कर्व है इसके नीचे यहाँ पे लिखा है 6 आवर्स और यहाँ पे लिखा है 7 आवर्स। अब हमारी डायग्राम में क्या हुआ है बेटा, हमने जो पॉइंट सिलेक्ट किया, हमारा जो पॉइंट आया वो लेट अस अज्यूम के यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट। दिस इज वेयर वी गॉट अवर पॉइंट। ओके, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, जो राउंड हमने लिया था यहाँ पे, बेसिस 4 आवर 18 मिनट्स। यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है वर्टिकली अपवर्ड्स लाइक दिस। बेटा अप टू हियर इज क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, यहाँ तक क्लियर है सर, लेकिन कितना ऊपर जाना है और कहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है? अब देखो, अगर मेरी ड्यूरेशन ऑफ टाइड होती 5 घंटे तो मैं जाता यहाँ तक और मैं रुक जाता यहाँ पे जाके। अगर मेरी ड्यूरेशन होती 6 घंटे की तो मैं यहाँ तक चला जाता, यहाँ तक, क्योंकि ये 6 घंटे का टाइड है। दिस इज 6 आवर कर्व ना। अगर मेरी ड्यूरेशन 5 घंटे की होती तो मैं यहाँ पे रुक जाता। अगर मेरी ड्यूरेशन 6 घंटे की होती तो मैं यहाँ पे रुक जाता। और अगर मेरी ड्यूरेशन 7 घंटे की होती तो मैं यहाँ पे जाके रुकता। दिस इज वेयर आई वुड हैव स्टॉप्ड इफ माई ड्यूरेशन वॉज 7 आवर्स। ये भी क्लियर है बेटा? यस सर, ये भी क्लियर हो। अब हमारी ड्यूरेशन कितनी है? 5 आवर 48 मिनट है। यस सर।
तो अगर 5 घंटे ड्यूरेशन होती मैं यहाँ रुकता, 6 घंटे ड्यूरेशन होती यहाँ रुकता। सो टोटल यहाँ से लेके यहाँ, यू कैन कॉल इट एज ए, यू कैन कॉल दिस एज बी। ए टू बी जो डिस्टेंस है, दिस रिप्रेजेंट 60 मिनट्स। हमें जाना है 5 आवर 48 मिनट पे, मतलब मुझे ए से 48 मिनट और ऊपर जाना है। अगर ये टोटल 60 मिनट है तो मुझे 48 मिनट पे जाके रुकना है। आई स्टॉप हियर। ये मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया? 48 इज अप्रॉक्सीमेटली 3/4 ऑफ द टोटल। सो इफ़ यू डिवाइड इट इनटू 2, ये जो पॉइंट है दिस रिप्रेजेंट्स 5.5 आवर। अगर इसको भी 2 में डिवाइड कर दो, दिस रिप्रेजेंट 5 आवर 45 मिनट। इससे थोड़ा सा ऊपर अगर ले लें, दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल बी गोइंग। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इज इट मेकिंग सेंस? ओके सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया अभी। दिस इज 30 मिनट्स, दिस इज 45। हम 45 से थोड़ा सा और ऊपर चले गए हैं। दिस विल बी 60 मिनट्स कंप्लीट। दिस विल बी 00 मिनट्स हियर। ओके सर हम इसको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी इंटरपोलेट कर सकते हैं ना सर, जो हमें टाइम जैसे हमें 12 मिनट्स फ्रॉम 6 o'clock चाहिए। हाँ बेटा, यू वांट टू इंटरपोलेट इट बैकवर्ड फ्रॉम बी? ये सर जो भी नियरेस्ट पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग जो हमें मेजर करके आ रहा है एबी का, तो हम उससे भी ले सकते हैं ना सर? ले सकते हो बेटा। आपने यहाँ 5 आवर 48 मिनट लिखा है, दिस इज 12 मिनट लेस देन 6। सो आप 6 Yes, घंटे का जो कर्व है उससे 12 मिनट पीछे भी आ सकते हो। दैट ऑल्सो यू कैन डू। ओके। ओके, और बेटा और कोई डाउट? नहीं सर, समझा। Very good, great. So you see there is not much of a difference between the calculation of tide in volume 1 and 2 and 3. The only difference is volume 1 में हमें नीप और स्प्रिंग रेंज के हिसाब से इंटरपोलेशन करनी होती है, और वॉल्यूम 2 में हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइड के हिसाब से इंटरपोलेशन करनी होती है। 5 आवर 6 आवर 7 आवर basis the duration. That is the only difference. The method is more or less यहाँ पे सर किसी भी केस में सर नीप और स्प्रिंग कर्व का यूज नहीं किया जा सकता है इन एनी केस? नहीं बेटा, इस डायग्राम में, इस मेथड में, वॉल्यूम 2 एंड 3 में नीप और कर्व रेंजेस का यूज कहीं नहीं होता है इन कैलकुलेशन ऑफ हाइट्स। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है सर? ओके, दिस इज बेसिकली बेटा ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइड। आप किसी भी पोर्ट में अगर जाते हो ना, हमें देखना होता है कि वहाँ पे जो पानी का लेवल ऊपर या नीचे जा रहा है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है। ओके, वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है कि अगर टाइम 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे होगा तो हमारी हाइट अलग अलग होनी चाहिए, या वो रेंज के साथ प्रोपोर्शनल है। ओके, वॉल्यूम 1 जो है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स यूरोपियन वाटर्स। यूरोपियन वाटर में जो टाइड ऊपर या नीचे जाता है किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट में, दैट इज डिसाइडेड बाय कि वहाँ पे रेंज ऑफ टाइड कितनी है। अगर कहीं पे रेंज ऑफ टाइड 5 मीटर है, स्प्रिंग और नीप की लेट अस से 5 मीटर और 7 मीटर है, तो एक पर्टिकुलर डे को कितनी वहाँ पे हाइट होगी, दैट विल बी इंटरपोलेटेड बिटवीन दोज रेंजेस। लेकिन अगर यही आप इंडिया में आ जाओ, इंडियन पोर्ट्स में हमें स्प्रिंग और नीप रेंजेस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंडियन पोर्ट्स में जो पानी की हाइट है दैट इज डिसाइडेड बाय कि टाइड की ड्यूरेशन कितनी है। हाई वाटर और लो वाटर में डिफरेंस 5 घंटे का है तो इतनी हाइट होगी, 6 घंटे का है तो इतनी हाइट होगी, 7 घंटे का है तो इतनी हाइट होगी। दिस इज बेसिकली हाउ द टाइड राइजेज एंड फॉल्स एट ए पर्टिकुलर प्लेस। और ये हमने चेक कैसे किया है? सर जब हम लोग नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड पढ़ रहे थे सर, तो इन कंजक्शन ऑफ मून एंड सन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से नीप और स्प्रिंग टाइड अकर करती है। तो सर क्या स्विस के एरिया में जहां हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या यहाँ पे स्प्रिंग और नीप टाइड नहीं हो सकती सर? होती है बेटा, बिल्कुल होती है। स्प्रिंग और नीप टाइड तो सब जगह ही होगी ना, चाहे वॉल्यूम 1 हो 2 हो 3 हो, वो तो सब जगह ही होगी। लेकिन Yes, sir. जो टाइड का राइज है और फॉल है
आप समझ रहे हो, किसी पर्टिकुलर डे को पानी का लेवल कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, इसको बोलते हैं राइज ऑफ टाइड एंड फॉल ऑफ टाइड। वो स्प्रिंग और नीप रेंजेस पे डिपेंड नहीं करता है स्वेज में। ओके सर, ओके, क्लियर ना वो सर। डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे, कि आज स्वेज में जो टाइड आ रहा है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। 5 घंटे की है तो इतनी हाइट होगी, 6 घंटे की है तो इतनी होगी, 7 घंटे की है तो इतनी होगी। ओके बेटा। ओके सर, क्लियर।